Good morning, class. So this is the last practice question that I am taking for the paper supply chain management. Already I have provided you with enough practice questions from each of the units uh, that is crisp and comprehensive covering each of the units. So I guess that and I hope that you have watched those videos thoroughly, okay, because that will be very helpful for your exam preparation, okay. So without wasting much time, I'm just starting with the last practice question that I have brought here. Okay. So just see the question. The question is asking to discuss the significance of the big data analytics. Okay. So you have to discuss what is the importance of big data analytics in the supply chain management. Also, you need to explain the relevant tools and techniques used for analyzing the big data in the supply chain. Okay. So what are the tools and techniques that are being used as a big data in the supply chain? Okay. Also, you need to provide examples of the companies which are how they are using the big data analytics which have improved their decision making and performance in the supply chain operations. Okay, so this is the question, and you know this question will come for 12.5 marks. This type of question will come for 12.5 marks, right? Okay, so let's see how we can frame the answer. So the first part was asking the significance of the big data analytics. I have already told you that you have to deal each part of the question in parts only. Like if the first part is asking the significance of data analytics, you are expected to write first part as the significance of data analytics only. Okay, so just see the significance of data analytics in supply chain management. You can just, this is the introduction part that I have given you. Just I have requested everyone in each of the video to write an introduction so that it gives a flow to your answer. Okay, so introduction maybe for 2 to 3 sentences where you're just copying from the question itself what is your flow and how you'll be dealing with the answer. Okay, so here you can just see what is written. The big data analytics, it has revolutionized the supply chain management, and because now the data, now the decisions are better informed, timely, and the strategic decision making can be done. Okay, so the significance of big data in supply chain management, it is very important in summarizing the several key specific areas. Okay, so if we talk about the first area, that is, it has enhanced the visibility and transparency. The first significance that of the big data analytics is it has from the time like digitization जब से हुआ है लगभग 2010 से, तो क्या है कि अपना जो है रियल टाइम डेटा जो है वो शेयरिंग बढ़ गया है, मतलब अपनी ट्रांसपेरेंसी और विजिबिलिटी बढ़ गई है. ओके, सो दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली कि this big data analytics has provided the real time visibility across all the supply chain and thus allowing companies to track the movement of goods, monitoring inventory levels and identify the potential disruption. So this transparency, it helps in minimizing the delays and optimizing the product flow. Okay, so this way big data has helped the supply chain management. Okay, then improve decision forecasting. Okay, with the big data, the demand forecasting is also increased because now it is possible to analyze the big data sets taken from all the various sources like market trend, customer behavior, ये सब से जो भी data collect हुआ था उसको अब जो है एक तो कलेक्ट करना इजी है, दूसरा एनालाइज करना इजी है, जिसके वजह से जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो बेटर एक्यूरेट मतलब अब हो पाती है ना आफ्टर दिस बिग डेटा एनालिटिक्स. ओके, then operational efficiency, the operational efficiency has also been increased after the this introduction of the big data, because आपको पता है now the companies, they can streamline the operation with all other departments, है ना, and that reduces the lead time and improve the overall productivity. Okay, so these are the significance or the importance of big data. Also cost reduction. So after the introduction of the big data analytics, the cost has also reduced for the companies because the companies can save their save the can have the opportunity, cost saving opportunities, such as like the companies can optimize the transportation routes, the companies can negotiate better with the supplier contracts क्योंकि उनके पास बिल्कुल supplier के सारे information होते हैं, and then they create a better contracts and get the better and reliable suppliers, right, and also reduce the waste. So this way cost reduction is also done. दूसरा हो जाता है risk management. Risk management का क्या है कि
So by analyzing the historical data, right? तो historical data देख करके they can identify, the companies can pre-handed identify the patterns and identify the potential risk, and thus can prepare themselves beforehand or pre-handed before, and thus mitigate the risk. ओके तो रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प कर रहा है बिग डेटा. ठीक है, उसके बाद सप्लायर मैनेजमेंट में इनहेंस द सप्लायर मैनेजमेंट, बिकॉज विद द बिग डेटा the companies can better assess and manage the suppliers by evaluating their performance metrics and also ensuring that the standard is met and all these things can be done. So a better relationship can be developed with the supplier, and thus that can help to enhance the supplier management as well. So these are the importance of the big data analytics in the supply chain management. You can say these are the contributions that the big data has done. And the next part of the question was asking about the tools and techniques for analyzing the big data in supply chains. So the first is data mining. सबसे पहले तो डेटा माइनिंग मतलब डेटा का जो भी टेक्निक्स होता है, लाइक टेक्निक्स सच एज क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, देन एसोसिएशन, आर these are used to uncover the patterns and relationship. जब क्लस्टरिंग, जब डेटा कलेक्ट होता है, जब रॉ डेटा आता है, तो फिर उसका क्लस्टरिंग किया जाता है कि दिस कैन बी क्लस्टर्ड. क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग, है ना, कि जो सिमिलर पैटर्न दिखा रही है, सिमिलर इसमें फॉल कर रहा है, उनको एक साइड करते हैं, मतलब सेगमेंट करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं. तो ग्रुपिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, फिर तो इससे क्या होता है ना, एक पैटर्न और एक एसोसिएशन, एक रिलेशनशिप उस लार्ज डेटा सेट का पता चल पाता है ना, है ना. तभी तो वो डेटा जो है आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, यू कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड एंड ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज, राइट. दूसरा हो गया प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स दूसरा अपना टेक्निक होता है. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आपको पता ही है कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बेसिकली जो है वो क्या करता है, हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर डिमांड, राइट, एक्यूरेट फ्यूचर डिमांड, है ना. तो फ्यूचर फोरकास्ट और ट्रेंड के लिए यूज होता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जिसमें क्या होता है, एल्गोरिथम्स और मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज की जाती है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज की जाती है टू फोरकास्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स एंड डिमांड. ओके, एंड दिस वे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग. ओके, फिर आ जाता है आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस, सॉरी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. डिस्क्रिप्टिव तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है, एक्चुअली टूल्स लाइक डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, ये सारे टूल्स यूज होते हैं. और इससे क्या होता है, अभी करंट हिस्टोरिकल डेटा परफॉर्मेंस जो है वो कलेक्ट होता है, एंड दस वी कैन जस्ट गेट द कि कौन कौन से अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है ना. तो जो हिस्टोरिकल डेटा कलेक्शन होता है वो कौन से टेक्निक से होता है, वो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के थ्रू होता है. उसमें डैशबोर्ड वगैरह जैसा टूल्स लगता है. प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आल्सो वी हैव डिस्कस. प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि हम लोग जो है डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं ना. सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव में डेटा कलेक्ट होता है, प्रेडिक्टिव में उससे प्रेडिक्ट करके उसकी एनालिसिस पैटर्न्स निकाल के प्रेडिक्ट करते हैं, एंड प्रिस्क्रिप्टिव में ऑन द बेसिस ऑफ दोस the some algorithms and simulations models are being रन, एंड देन उसके बेसिस पे क्या होता है, आप डिसीजन मेकिंग करते हो रिगार्डिंग ऑल द इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग. तो इसके बेसिस पे आप ये एल्गोरिथम्स वगैरह रन करके डिसीजन मेकिंग करते हो. फिर आपका क्या है कि रियल टाइम एनालिटिक्स जो है वो भी यूज होता है. तो रियल टाइम एनालिटिक्स आपको पता ही है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से यूज हो रहा है कि कंपनीज कैन गेट द रियल टाइम डेटा एंड दस एडजस्ट एनी लाइक एडजस्ट और रिड्यूस द रिस्क. ओके, कोई भी ऐसा इमीडिएट एडजस्टमेंट चाहिए या रिस्पॉन्स करना है तो दे कैन जस्ट डू दैट बिकॉज दे हैव द रियल टाइम डेटा अवेलेबल. बेसिकली ये ट्रैफिक रूटिंग वगैरह में यूज होता है कि अगर कहीं लॉजिस्टिक में अगर ट्रैफिक मिलता है तो फिर दे कैन देन एंड देयर एडजस्ट, है ना. तो बहुत सारे इनफैक्ट सप्लाई चेन का चेन में तो it is being used at all the levels. Okay, so these are the tools basically being used for analyzing the big data in the supply chain: the data mining, the descriptive, predictive, and prescriptive, and the real time analysis. Next, the last part of the question was to discuss the example of the big data examples of big data analysis in supply chain operations. Okay, so first example I have taken is the Walmart inventory management, because throughout the पेपर आई हैव बीन डिस्कसिंग कि वॉलमार्ट का इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छा है बिकॉज इट यूजेस बिग डेटा टू मॉनिटर द इन्वेंट्री अक्रॉस ऑल इट्स स्टोर्स. ओके, so and also it uses the sales data, weather patterns, local events. तो ये सारा कुछ ही कवर करता है, and thus Walmart can predict the demand better as compared to its competitors, है ना.
नेक्स्ट जो अपना हमने हमेशा एग्जांपल यूज किया है इज एफिशिएंट सर्विस, यू नो। तो अमेजन एक बिग डेटा एनालिटिक्स का एग्जांपल हो गया विच इज यूजिंग एडवांस एनालिटिक्स। तीसरा मैंने लिया है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, बिकॉज you know this Procter and Gamble, it uses this predictive analysis to forecast the demand of its products, and it is so accurate that uh, uh, that they are able to like adjust its production and supply chain strategies according to the market response, according to the changing market response so fastly. Okay, so Procter and Gamble, it also uses the big data analytics to forecast its demand, and it collects data from all the sources and does predict data more accurately and help in developing a better supply chain strategies accordingly. Okay, and the last thing, I have already requested you all that you must write a conclusion, concluding your answer that okay, so this is this big data is a part of the modern supply chain and management, and the companies can use this big data to lever their uh, decision making. Okay, and this big data will help in better decision making and significantly improve the performance of the company and the supply chain, better supply chain management as well. So this way a question has to be dealt. Okay, uh, we have already discussed and practiced enough question that will prepare the best for your exam. Okay, so still, if there is any topic, any subtopic which you have not understood, you can just write in the comment box. And if these videos are helpful for you, you can just give a like, the thumbs up. And so this was the last video for this paper, supply chain management and supply chain analytics. I have already uploaded all the videos, the short videos, and also the this practice questions for for particular units. Okay, so you may watch that video, and that will be very helpful for you. And after these exams, if you feel that any of the topic or any of the subject which you want me to discuss on, you can just write in the comment box. We can start the series accordingly. Okay, so thank you so much. Wish you all the best for your exam and perform well. Okay, for your exam, for your life, wherever you are, be the star, be the best of best. Okay, thank you so much. Have a good day and perform well.